Hello everyone. So after 43rd GST Council Meeting, a press release was there in which it clarified regarding the taxability of the flour mill. So it was a major relief to the flour mill owners. We all know around 4-5 months back, there was a massive search operation by DGGI on different flour mills in the state of West Bengal. There DGGI was of the opinion that tax rate on crushing income should be at the rate of 18%. But most of the millers were either paying 5% and in fact some were paying 0%. And from the day one I am tracking this case because I am personally involved in many matters, and I said that the tax rate will be either 0% or 5% depending on the fact whether the material component, that is packing material, is less than 25% or more than 25%. If packing material is more than 25%, the tax rate will be 5% because we are supplying this service to government and government is registered as a TDS deductor in GST. And even if anyone is registered as TDS deductor in GST, that person is supposed to be a registered person. This was our opinion from day one and it is very clearly mentioned in the law. But DGGI was not understanding this. DGGI was of the opinion that no, government is not a registered person. But a welcome press release came and there it is clearly mentioned that government will be considered as a registered person even if it is registered as a TDS deductor. So a major relief to the millers. So they have to pay 0% or 5%. In fact, we had advance ruling. I personally argued in that advance ruling, and that advance ruling also gave the same opinion that tax rate should be 0% if material component is less than 25%. But it was silent because this question was not asked whether the rate will be 5% or 18%. And we didn't ask this question because the law was very clear that tax rate has to be 5% because we are supplying this supply to the registered person. So it was a major relief last press release. But still, there are many questions unanswered which is going in the mind of the millers. The most important question that is going in the mind of the millers are कि भाई जो हम लोगों ने टैक्स दे दिया उसका रिफंड कब मिलेगा? Obviously, you will get the refund, no doubt about that. But before that, there are still some questions which are unanswered. The main question is that most of the millers were paying tax on the cash income they are receiving from the government. But when government floated the order, when government floated the contract, there it was mentioned that government is paying some cash income, I think it's around rupees 136. Plus a non-monetary consideration in the form of gunny bags. So as per the GST law, non-monetary consideration is also included in the value of supply. So that is one point. And next point, after the search operation, state government issued a letter to DGGI where it mentioned that brand and refraction is also given to the millers, so that also carries some consideration. Now, West Bengal government उस वक्त क्या की कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई ब्रांड और रिफ्रैक्शन की भी तो एक वैल्यू है जो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगी, जिससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा. आई थिंक इट वाज कमिंग अराउंड 220. इससे क्या होगा, मटेरियल का कंपोनेंट विल रिड्यूस टू लेस देन 25%, एंड दैट्स व्हाई स्टेट गवर्नमेंट सेड कि इट शुड बी exempted. So now the main question is whether we should include non-monetary consideration in the value of supply or not. That is the very big question. Okay. So as per my opinion, gunny bags तो definitely include होना चाहिए. भाई brand और refraction is also non-monetary consideration. तो इसको लेके थोड़ा सा confusion है. Looking at the plain reading of the law, definitely all type of non-monetary consideration should be included. But again the question is, भाई हम नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इंक्लूड तो कर लेंगे, बट किस वैल्यू पे हम लोग इंक्लूड करें? द रीजन इज, भाई गनी बैग्स मान लीजिए उन्होंने 50, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, उन्होंने 50 रुपीज में इंक्लूड किया, बट व्हेन आई गो एंड सेल दिस गनी बैग इट विल बी सोल्ड ओनली फॉर ₹5. सो विच वैल्यू शुड आई इंक्लूड एज अ नॉन मॉनेटरी consideration? So this will be a big challenge. Same is with the case of brand and refraction. भाई मैं किस वैल्यू पे गनी बैग को इंक्लूड करूं? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड है जिसको लेके अभी भी लिटिगेशन चलेगा. बट स्टिल 18 से 5 आ गया. सो दिस इज द मेजर रिलीफ. भाई जो भी होगा मैक्सिमम 5% रेट पे होगा. 18% नाउ इज टोटली आउट ऑफ द पिक्चर. 18% से तो अभी गवर्नमेंट बिल्कुल भी
टैक्स डिमांड नहीं कर सकता। सो इट्स अ मेजर रिलीफ। अब जो अपने को रिफंड लेना है, बहुत लोगों ने टैक्सेस दे रखे हैं। अब दिक्कत क्या है, टैक्सेस भी आपने जो दे रखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मिलर्स हैव पेड टैक्स वॉलंटरली। हालांकि उन्होंने डीजीजीआई के कहने पे दिया, बट दे पेड द टैक्स वॉलंटरली इन DRC 03। नाउ व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? भाई उन्होंने वॉलंटरी पेमेंट किया, सपोज दिस रिफंड कम्स आफ्टर 1 year और रिफंड गेट सैंक्शनड आफ्टर 1 year, they'll be losing interest of 1 year because they had paid the tax voluntarily on record. ऑन रिकॉर्ड पे आपने तो वॉलंटरी टैक्स पेमेंट किया है, तो इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको इस पीरियड का इंटरेस्ट चाहिए, यस देयर इज अ वे आउट, यू हैव टू फाइल अ केस भाई, बिकॉज कि आपने भाई अपनी इच्छा से जमा नहीं किया, यू पेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डीजीआई, भाई उन्होंने डायरेक्शन दिया कि नहीं पे करना है, दैट्स व्हाई यू पेड द टैक्स। तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दिस होल अमाउंट बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व इज ह्यूज। तो इसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, बट ऑब्वियस बात है वो यूजुअल कोर्स में नहीं मिलेगा। डेफिनेटली यू कैन फाइल अ रिफंड, आप अभी रिफंड फाइल कर सकते हैं नॉर्मल कोर्स में अंडर द हेड एक्सेस टैक्स पेड। भी आपने एक्सेस टैक्स पे किया है तो आप रिफंड फाइल कर सकते हैं यूजुअल कोर्स में, फिर ये प्रोसीडिंग चलेगी बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व इज बिग। ऐसा नहीं कि लोअर लेवल पे आपका रिफंड पास हो जाएगा, बट डेफिनेटली यू डिजर्व अ रिफंड एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिफंड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये और इस रिफंड को निकालना और भी इजी इसलिए होगा उन मिलर्स के लिए भाई दोज हु हैव नॉट कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने तो टैक्स दिया ही नहीं है तो कलेक्ट करने की बात नहीं है। बट इसके अंदर बहुतों ने क्या किया, सपोज 130 रुपीज क्रशिंग इनकम आ रहा है तो उन्होंने उसको अज्यूम कर लिया दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर वो उसको अज्यूम कर लिया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इट मीन्स दे हैव रिसीव्ड द टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट, तो फॉर देम टू गेट द रिफंड विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट जिन्होंने टैक्स अलग से पे किया है भाई उनके लिए रिफंड मिलना काफी सिंपल होगा एंड दे विल गेट द रिफंड इजीली फ्रॉम द, आई विल नॉट से इजीली भाई, इट विल टेक सम टाइम एंड सम फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, क्योंकि लोअर लेवल पे ये सब रिफंड पास नहीं होंगे। सो विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर फ्यू डेज रिगार्डिंग अब अपने को क्या करना चाहिए। बट फिलहाल के लिए वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन टू कम। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नोटिफिकेशन, इट्स अ क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन एक बार फॉर्मली आने दीजिए, उसके बाद विल प्लान कि अपने को आगे कैसे करना चाहिए। वन मोर थिंग, मेनी आर डाउटिंग वेदर इट विल हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेट मी क्लियर यू, कोई भी क्लैरिफिकेशन का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। क्लैरिफिकेशन मीन्स व्हाट, भाई दिस थिंग वाज देयर इन द लॉ में पहले से लिखा हो तो उसको भी गवर्नमेंट केवल क्लैरिफाई कर रहा है। भाई हम लोगों ने पहले डे 1 से बहुत सारी वीडियोस है, आई विल शेयर ऑल दोज वीडियोस आल्सो इन द लिंक। भाई सारी वीडियोस में हम लोग का एक ही ओपिनियन था, इट कांट बी एनीथिंग अदर देन 0 और 5%। अब 0 होगा कि 5 होगा ये डिपेंड करता ऑन द फैक्ट ऑफ द केस। ओके, इसमें एक चीज और है कि भाई कई लोगों ने 0 दे रखा है, कई लोगों ने 5 दे रखा है। जो लोग 0 दे रखे हैं वो लोग 0 के लिए फाइट करेंगे, जो लोग 5 दे रखे हैं वो लोग 5 के लिए फाइट करेंगे। बट आई से यू more beneficial is 5% because input is much more than the tax rate of 5%. So there creates a situation of inverted duty जिसमें आप रिफंड ले सकते हैं या फिर उस इनपुट को किसी दूसरे जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली इट्स अ गुड न्यूज फॉर द फ्लावर मिल्स। You just wait for few more days. There will be more clarity after the clarification. Then definitely you should take steps to how to claim the refund. Okay. So thank you so much. If there is any help, definitely we are always there with you. You can call or message us. Thank you so much.